Bismillahirrahmanirrahim. I hope you will be fine. As I am teaching you the subject hydrology, today we will have our lecture number 5. In lecture number 5, we will study about relative humidity and dew point. So, what is relative humidity and dew point? To know about this, the relation between temperature and saturation vapor pressure is shown in figure 2.1. This is the figure 2.1, which shows the relation between the temperature and saturation vapor pressure. This side will show you this side that the vertical which is the vertical side shows you the saturation vapor pressure, and the horizontal side is showing you the temperature. Let suppose that a parcel of air has a temperature T and vapor pressure E, indicated by point D as shown in figure. Let we suppose that we have a point which is point D. This point D have a parcel of air which has temperature T at this point, clear, and at this point also it has a vapor pressure which is E. If more vapor were added at this constant temperature, then this D would move towards the will move vertically upward towards B, clear, and the air would be saturated at when B reached the corresponding saturation vapor pressure, and it would be ES, clear. The difference ES minus E is equal to saturation deficit, and the relation E divided by ES into 100 is equal to relative humidity. When the air is cooled at a constant atmospheric pressure, the temperature at which air becomes saturated is called the dew point. That is, the point D will become the point C. So actually the difference between the ES and E, that is the saturation vapor pressure and minus vapor pressure, is called the saturation deficit, and the vapor pressure divided by saturation vapor pressure multiplied by 100 is called the relative humidity. And when the air is cooled down, and when the air is cooled down at a constant atmospheric pressure, the temperature at which this air becomes saturated is called dew point. The point D will at this point the point D will come to point C as shown in figure 2.1. The relative humidity is actually the ratio of actual vapor pressure minus certain temperature the relative humidity is the ratio of actual vapor pressure at certain temperature and the saturation vapor pressure. Thus the relative humidity is 100% when the air is saturated. If the parcel of air is cooled at a pressure E and without addition of vapor, the point D would come horizontally towards C, as you can see in the figure. If the parcel of air is cooled at constant pressure E, clear, here at this point, then this point D will move horizontally towards the C without addition of any vapor pressure. The air would be saturated when C reached, and the corresponding temperature TA is the dew point. So at this point the air would be saturated when the D reached the C, and the corresponding temperature TA is called the dew point. The dew point is thus the temperature at which the water vapor present in the atmosphere will condense.
रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? सो उसके लिए हम जो है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर साइकोमीटर, हेयर हाइग्रोमीटर, हाइड्रोग्राफ एंड थर्मोहाइड्रोग्राफ। सो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट सर्टेन पॉइंट्स या एट एनी पॉइंट। साइकोमीटर क्या है? साइकोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू थर्मोमीटर्स, ड्राई बल्ब thermometer and wet bulb thermometer. The mercury bulb of wet bulb thermometer is covered by a jacket of clean muslin cloth saturated with water. साइकोमीटर जो है हमारे पास उसके अंदर जो है दो थर्मोमीटर होते हैं, एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है, एक वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है। जो मर्करी बल्ब होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर का, उसको जो है कवर किया जाता है विद अ जैकेट ऑफ क्लीन मुस्लिन क्लॉथ, ठीक है, जो कि वाटर से सैचुरेटेड होती है। दिस इज डन बाय पुटिंग अ बीकर विद डिस्टिल्ड वाटर अंडरनीथ सो दैट द बल्ब इज नॉट सबमर्ज इन वाटर बट ओनली द क्लॉथ। और जो वाटर जो क्लॉथ है उसको सैचुरेटेड रखने के लिए एक बीकर रखा जाता है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर का नीचे, और ये कोशिश की जाती है कि जो बल्ब है वो जो है सबमर्ज ना हो वाटर के अंदर, बस सिर्फ कपड़ा जो है वो सबमर्ज हो। ये आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, ये आपके पास जो है वेट बल्ब थर्मोमीटर है। जो वेट बल्ब थर्मोमीटर है इसके अंदर जो ये आपके पास मर्करी बल्ब है और इसके नीचे जो है इसके ऊपर जो है क्लॉथ लगाया गया है, ठीक है, मुस्लिन क्लॉथ, और इसके नीचे जो है एक बीकर रखा गया है जिसके अंदर जो है डिस्टिल्ड वाटर जो है रखा गया है ताकि ये जो कपड़ा जो है ये सैचुरेटेड रहे। देन वाटर राइजेस ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। The thermometer are ventilated by whirling or by use of a fan. जब आपके पास जो वाटर है वो राइज हो जाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो जो थर्मोमीटर है उसको जो है वेंटिलेटेड जो है रखा गया है, ठीक है, with the help of a fan. As a result of evaporation, cooling takes place. evaporation की वजह से हमारे पास जो है कूलिंग का अमल जो है वो अकर होता है। रीडिंग्स आर टेकन ऑन बोथ द थर्मोमीटर साइमल्टेनियसली, और उसी पॉइंट के ऊपर जो है दोनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग ली जाती है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ली जाती है। मेजरमेंट किस तरह करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का? अब इनके थ्रू the dry bulb reading is denoted as TD and wet bulb reading is denoted as TW. So जो ड्राई हमारे पास जो ड्राई बल्ब की रीडिंग आती है, यानी कि जो ड्राई थर्मोमीटर की रीडिंग आती है उसको हम TD से डिनोट करते हैं, और जो वेट थर्मोमीटर की रीडिंग हमारे पास आती है उसको हम जो है TW से डिनोट करते हैं। The difference of these two temperature is called the wet bulb, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का उसको हम जो है कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि TD minus TW is called the wet bulb depression. Using these readings, the relative humidity can be found from the psychometer, और इन रीडिंग्स को यूज करके हम जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं साइकोमीटर टेबल से। The value of E for air temperature T may be obtained by the relation ES minus E is equal to gamma into T minus TW. So इससे जो वैल्यू ऑफ E है जो कि एयर टेम्परेचर के T के लिए, वो हम जो है इससे ऑब्टेन कर सकते हैं इस रिलेशन से कि ES minus E is equal to gamma into T minus TW, और E is equal to ES minus gamma into T minus TW. इसमें हमारे पास जो गेमा है ये साइकोमीटर कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0.660 के बराबर होती है, और जो E है ये हम मेजर करते हैं इन मिली बार यूनिट्स, और 0.485 and 0.485 when it is measured in units of mm of mercury, और हमारे पास जो है ये 0.485 होता है जब हम इसको मेजर करते हैं इन यूनिट्स ऑफ mm ऑफ मर्करी, यानी कि हम जब इसको जो है फाइंड करेंगे mm ऑफ Hg में, तो हम जो है इसको जो है वो वैल्यू जो है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास जो है वैल्यू जो है मिली बार की बजाय हमारे पास mm ऑफ Hg में आएगा।
इसके ऊपर जो है एक एग्जांपल है, given the air temperature as TA is equal to 24 degree centigrade and the wet bulb temperature TW is equal to 21 degree centigrade, find the relative humidity and D point. हमारे पास जो है एयर टेम्परेचर जो है वो गिवन है, जिसको हम TA से डिनोट किया है, उसका टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, गिवन है। जो वेट बल्ब टेम्परेचर है TW, उसको TW से डिनोट किया गया है वेट बल्ब टेम्परेचर से, वो गिवन है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डी पॉइंट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो है वेट बल्ब डिप्रेशन जो है हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2.2। इक्वेशन 2.2 आपके पास जो है ये है, आपके पास TD माइनस TW इज इक्वल टू वेट बल्ब डिप्रेशन। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है वेट बल्ब डिप्रेशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं, दैट इज TA माइनस TW। सो TA आपके पास जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और TW आपके पास 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो आपके पास जो वेट बल्ब डिप्रेशन है वो इसकी वैल्यू आपके पास आती है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ फ्रॉम टेबल A1 अपेंडिक्स A वी गेट कि हमारे पास जब टेम्परेचर TA हमारे पास 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो उस केस के अंदर आपके पास जो ES की वैल्यू है वो आपके पास जो है 22.27 mm ऑफ Hg के बराबर होती है। और TW के लिए TW की अगर आपके पास जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है तो EW जो है आपके पास उस केस के अंदर 18.64 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। Therefore equation 2.4 yields, equation 2.4 आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है equation 2.4 है, ठीक है। सो इससे आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी E is equal to 18.65 minus 0.485 into 3। 18.65 आपके पास जो है ये वैल्यू है EW की, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन में आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास ये वैल्यू है 18.64, ठीक है, माइनस 0.485 आपके पास, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपके पास जो है इसका जो है यूनिट है कि इसका जब आप mm ऑफ Hg में फाइंड करेंगे तो आप इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.485 के साथ। और 3 जो है आपके पास जो है वेट बल्ब डिप्रेशन है, ठीक है। सो आपके पास जो E की वैल्यू आती है, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी 17.20 mm ऑफ Hg। इससे हम जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हमारे पास था E डिवाइडेड बाय TA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो हम उसको जो है उसे जो है फाइंड करेंगे। सो सॉरी E डिवाइडेड बाय ES मल्टीप्लाई बाय 100। सो E की वैल्यू हमारे पास 17.20 आई है और ES की वैल्यू हमारे पास 22.27 आई है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो हमारे पास जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज आती है वो हमारे पास जो है 77% आता है। And the dew point in the is the temperature reading from the table A1 of appendix A corresponding to E, which is 19.7 degree centigrade। और टेबल A1 अपेंडिक्स A को देखते हुए हमारे पास जो है जो corresponding जो E के ऊपर हमारे पास जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आता है वो हमारे पास 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। The next instrument in order to measure the relative humidity is hair hygrometer. The hair hygrometer consists of a frame in which a strand of hair is kept at approximately constant tension. The changes in the length of this hair corresponding to the changes in relative humidity are transmitted to through a pointer. This instrument is seldom used for meteorological purposes, but as it is an inexpensive humidity indicator, so therefore it is used often found in the homes and offices. The next instrument is the hair hygrograph. This instrument is essentially a hair hygrometer, but it is an automatic recording instrument. The movement of hair activates a pen which moves on a rotating drum and records on that rotating drum. The hygrothermograph combines the registration of both relative humidity and temperature on one record sheet.
The hydrothermograph is the sheet on which this pen moves the hair when hair moves, or the movement of hair activates the pen, then that pen moves on the sheet, and that sheet is called the hydrothermograph. And this hydrothermograph gives you the combined reading of the relative humidity and temperature on one sheet. Here your today's lectures ends.